हाँ सर, सर स्टार्ट करा. Okay, thank you. हेलो. सर Good स्टार्ट करा. afternoon, all of you. ओके सर. Okay, okay. Students, एक review formulas चा. All of you concentrate. भक्ती, तू जर फॉर्म्युले लिहून घेतलेले नसेल तर लिहून घे पटकन. एका डबल पेजवर लॉंग बुक मधलं एक डबल पेज काढ आणि त्यावर हे पटकन फॉर्म्युलेज लिहून घे. भक्ती, भक्ती तुझा माईक चालू आहे का? हा, पटकन फॉर्म्युलेज लिहून घे. हा ठीक आहे, पटकन लिहून घे फॉर्म्युलेज. डबल पेज काढ एक, त्यावर 16 फॉर्म्युले आणि 6 रूल लिहायचे आहेत. 16 फॉर्म्युले आणि 6 रूल पटकन लिहिण्याचा प्रयत्न कर. Formula of derivatives. Derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Derivative of x is 1. Derivative of k constant is 0. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. भक्ती झालं का लिहून? Okay. Derivative of 1 upon x raised to n is minus n upon x raised to n plus 1. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x log a. Derivative of log x to base e. Derivative of log x to base e. Base e लिहायचा नसतो, तो समजून घ्यायचंय. Derivative of log x is 1 upon x. Derivative of log x to base a is 1 upon x log a to the base e. पुन्हा एकदा base e लिहायची गरज नाहीये. This should be understood. Derivative of log x to base a is 1 upon x log a. भक्ती झालं का लिहून? ओके. Derivative of sin x is cos x. Derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x is sec square x. Derivative of cot x is minus cos x square x. Derivative of sec x is sec x into tan x. And derivative of cosec x is cosec x minus cosec x into cot x.
Derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. All of you have to by heart these formulas. Write it and practice it. Don't by heart it orally. Please don't by heart it orally. लिहून practice करायचे. Write it down and practice. Actually, 12th standard's derivatives are base सुरू झाला. We have already started with the preparation for 12th standard. Bhakti, over. विशाल तू पण absent होतास ना विशाल? Yes, sir. फॉर्म्युले लिहिलेस? Oh, yes, sir. Okay. डबल पेज वरच रूल्स लिहायचे आहेत. डबल पेज वर. Rules of derivatives. Rules of derivatives. If y equal to u plus v, then dy upon dx is equal to du upon dx plus dv upon dx. If y equal to u plus v, then dy by dx is equal to du upon dx plus dv upon dx. Second rule, if y equal to u minus v, then dy by dx is equal to du upon dx minus dv upon dx. Third rule, if y equal to u into v, then dy upon dx is equal to u dv upon dx plus v du upon dx. Third rule, if y equal to u into v, then dy upon dx is equal to u dv upon dx plus v du upon dx. Fourth rule, if y equal to u upon v, then dy upon dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square, where v square is not equal to 0. Fourth rule, if y equal to u upon v, then dy upon dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square, where v square is not equal to 0. Vishal and Bhakti, are you done with all the 4 rules? Vishal dhala lehun? Vishal. Yes, sir. If y equal to u into v into w, then dy upon dx is equal to u into v dw upon dx plus u into w dv upon dx plus v into w du upon dx. If y equal to u into v into w, then dy upon dx is equal to u into v dw upon dx plus u into w dv upon dx plus v into w du upon dx. If y equal to ku, then dy upon dx is equal to k into du upon dx, where k is a constant. If y equal to ku, then dy upon dx is equal to k into du upon dx. In the list of 16 formulas, अकेले constant k का derivative is 0. अकेले constant k का derivative is 0. But according to the 6th rule, constant k
if it is with the function u, then constant k will be kept out of the derivative and we'll be taking the derivative of u. मतलब if y equal to ku, then dy by dx is equal to k बाहर रहेगा and we'll write into du upon dx, into du upon dx. If constant is all alone, the derivative is 0. But if constant is along with the function u, then k will stay away from differentiation and we'll be differentiating u with respect to x, du upon dx. Vishal, Bhakti, are you both done? Done, sir. Okay. Now I go ahead with the sums. Just check the question. Third question, exercise 9.2. Third question, exercise 9.2. The first sub question. Y equal to x square into root x plus x raised to 4 into log x. Y equal to x square root x plus x raised to 4 into log x. Please check the question. Jayesh? हाँ सर बराबर है. ओके. कोणाकोणाचा माईक चालत नाहीये. एक भक्तीचा माईक चालत नाहीये. अजून कोणाचा माईक चालत नाहीये. Is there anybody whose mic is not working? Except Bhakti. Ashley, is your mic working? Ashley? Yes sir. Okay. Pratik? Yes, sir. Pratik? Jayesh? Yes, sir. हाँ सर. Jayashri? Jayashri? Siddharth? Jayashri? Siddharth? हो सर. Jayashri? जयश्री माइक चालू आहे का? हो सर. ओके. Mehak? Mehak? Yes, Is your mic sir. working? Okay. Yes, sir. So let us start with y equal to x square root x plus x raised to 4 into log x. Look at the way I'm writing x square root x. Root x can be written as x raised to half. Root x can be written as x raised to half. And then law of indices. Which law of indice? X square into x raised to half per law of indice. Which law of indice? A raised to m into a raised to n. सर लिहिलं तुम्ही. बोल दिसलं बोल. नाही.
हाँ बोल ना. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. How much is m here? 2. How much is n here? 1/2. Right. So I will get x raised to 2 plus half. 2 plus half, which is equal to x raised to 2 into 2, 4 plus 1 upon 2. How much is that? How much is that? 5/2. X raised to 5 by 2. X raised to 5 by 2. Can you see it here? X raised to 5 by 2. So x square root x is x raised to 5 by 2 as per the law of indices. X square root x is, what is that equal to? X square root x, what is it equal to? X raised to 5/2. 5 by 2, right. Now differentiating with respect to x. Please concentrate. U plus v के अंदर uv. U plus v के अंदर uv. U plus v वाले रूल के अंदर uv रूल यूज होगा. तो d upon dx of x raised to 5 by 2. Can you see the brackets that I've put right now with the highlighter? Can you see Yes. the brackets? वो UV rule use हुआ है पूरे bracket के अंदर. Look at x raised to 4 as u and look at log x as v. UV rule use हुआ है. Look at x raised to 4 as u and look at log x as v. And UV rule is used. U into derivative of v plus v into derivative of u. So x raised to 4 into derivative of log x plus log x into derivative of x raised to 4. X raised to 4 into log x पर uv rule use हुआ है. U derivative of v plus v derivative of u. Please write it down fast. Write it down. And let me know once you finish writing. Let me know once you finish writing. Done. Is there anybody who is wanting me to wait?
Done, sir. I shall move ahead. Yes. X raised to n का formula, first formula, n into x raised to n minus 1. So x raised to 5 by 2 का derivative is 5 by 2 into x raised to 5 by 2 minus 1. X raised to n का derivative का formula use हुआ on x raised to 5 by 2. So x raised to n का derivative is n into x raised to n minus 1. So x raised to 5 by 2 का derivative is 5 by 2 into x raised to 5 by 2 minus 1. This x raised to 4 remains untouched, unchanged. उसके बाद में वो 1 by x कहां से है? Derivative of log x. Log x derivative. Yes, derivative of log x, right? Perfectly right. What is derivative of log x? 1 by Right. उसके बाद log x remains untouched, unchanged. Log x remains untouched, unchanged. ये 4x cube कहां से आया? Where did we get that 4x cube from? by differentiating x raised to 4, sir. derivative of x raised to 4. हाँ, x raised to n का डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1. तो x raised to 4 का डेरिवेटिव is 4 into x raised to 4 minus 1. That is 4 into x cube. Now the next step. What is 5 by 2 minus 1? 5 by 2 minus 1. 3 by 2 is the LCM. 2 is the LCM. So 5 minus 2 upon 2. That is 3 by 2. One of the x gets cancelled. What remains is x cube. And log x into 4x cube is written as 4x cube log x. Can you see the bracket here? Yes, Can you see sir. the bracket? Can I take something common? Can I take something common from the bracket? Yes, sir. What could be taken common from the bracket? X cube. Right. What remains after we take x cube common? 1 plus 4 log x. 1 plus 4 log x. So the final answer is dy by dx equal to 5 upon 2 x raised to 3 by 2 plus x cube into brackets 1 plus 4 log x. 1 plus 4 log x. One plus 4 log x. Come on, take it down quickly.
Done, sir. Anybody any problem in the sum? Anybody any problem in the sum? Do you have any problem in the sum? No. No, sir. Now, let us go ahead with the next sum. Let us go ahead with the next sum. Just check the question. Y equal to e raised to x into sec x plus x raised to 5 by 3 into log x. Y equal to e raised to x into sec x minus x raised to 5 by 3 into log x. Check the sum. Check the question. It's the right. Yes, sir. Okay. Now, e raised to x into sec x minus x raised to 5 by 3 into log x. पहले u minus v rule use होगा. If y equal to u minus v, then dy by dx is equal to du upon dx minus dv upon dx. पहले u minus v rule use होगा, subtraction rule. Second rule use होगा, second rule. पहले u minus v वाला rule use होगा. Look at e raised to x sec x as u and look at x raised to 5 by 3 into log x as v. If y equal to u minus v, then dy by dx is equal to du upon dx minus dv upon dx. Anybody any problem? Anybody any problem? No, sir. No. उसके बाद यूवी रूल यूज होगा 2 बार. यूवी रूल यूज होगा 2 बार. पहले look at e raised to x as u and look at sec x as v. Look at x raised to 5 by 3 as u and look at log x as v. यूवी रूल यूज होगा 2 बार. यूवी रूल 2 बार. u derivative of v plus v derivative of u. U derivative of v plus v derivative of u. फिर से uv rule use होगा. Look at x raised to 5 by 3 as u and look at log x as v. U derivative of v plus v derivative of u. UV रूल 2 बार यूज होगा. एक बार e raised to x cos x पर look at e raised to x as u and look at sec x as v, और दूसरी बार x raised to 5 by 3 log x पर look at x raised to 5 by 3 as u and look at log x as v. U derivative of v plus v derivative of u. फिर कल मैंने बताया था कि d by dx के पीछे जो कुछ है वो अनटच्ड अनचेंज्ड रहेगा. d by dx इज एन ऑपरेटर जो सामने ऑपरेट करेगा.
तो ये e raised to x जो d by dx के पीछे है, that remains untouched, unchanged. What is derivative of sec x? What is d by dx of sec x? Derivative of sec x. Sec x into tan x. Right. Derivative of sec x is sec x into tan x. उसके बाद प्लस साइन. d by dx के पीछे जो sec x है, that remains untouched, unchanged. d by dx के पीछे जो sec x है, that remains untouched, unchanged. What is derivative of e raised to x? d by dx of e raised to x. d by dx of e raised to x is e raised to x itself. d by dx of e raised to x is e raised to x itself. उसके बाद x raised to 5 by 3 remains untouched, unchanged. X raised to 5 by 3 remains untouched, unchanged. How much is derivative of log x? What is the derivative of log x? 1 by x. Right. This d by dx के पीछे वाला log x remains untouched, unchanged. d by dx के पीछे जो log x है वो remains untouched, unchanged. d by dx of x raised to 5 by 3 पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? Which formula is applicable on d by dx of x raised to 5 by 3? X raised to n. Right. क्या है उसका डेरिवेटिव? What is the derivative of x raised to n? n into x raised to n minus 1. Right. तो x raised to 5 by 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? What is x raised to 5 by 3 का डेरिवेटिव? What is x raised to 5 by 3 का डेरिवेटिव? 5 by 3 x raised to 2 by 3. Right. 5 by 3 minus 1 is 2 by 3. 5 by 3 minus 1 is 2 by 3. अच्छा, पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा? पहले ब्रैकेट में से E raised to x into sec x. हाँ, तो बचेगा क्या? What remains? What remains? बराबर बोल रहा है तू. Tan x plus 1. Yes, e raised to x sec x कॉमन निकालेगा तो tan x plus 1 बचेगा पहले ब्रैकेट्स में से. फर्स्ट पेयर ऑफ ब्रैकेट्स. अब दूसरे पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में से क्या कॉमन निकलेगा? पहले काम कर. ये x raised to 5 by 3 into 1 upon x दिख रहा है क्या तुम लोगों को? x raised to 5 by 3 into 1 upon x. Yes, sir. इस पर लॉ ऑफ इंडाइस लगेगा. कौन सा लॉ ऑफ इंडाइस लगेगा? x raised to 5 by 3 into 1 upon x पर कौन सा लॉ ऑफ इंडाइस लगेगा? 1 upon a raised to m is equal to a raised to minus m. नहीं, तेरे पास a raised to m upon a raised to n डायरेक्ट है ना एशले? Sorry, sir. a raised to हेलो Yes, sir. a raised to m upon a raised to n. ये जो नीचे वाला x है
नीचे वाला x जो मैंने अभी सर्कल किया है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. उसका पावर कितना है? व्हाट इज इट्स पावर? 1. हाँ, तो x रेज टू 5/3 अपॉन x रेज टू 1 पर a रेज टू m अपॉन a रेज टू n का लॉ ऑफ इंडस. व्हाट इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल टू? A raised to to minus n minus n. हाँ, क्या बोला एशले? व्हाट डिड यू से? पूरा लॉ ऑफ इंडाइस बोल, पूरा लॉ ऑफ इंडाइस बोल, पूरा. A raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. That is why x raised to 5/3 into 1 upon x becomes x raised to 5/3 minus 1. X raised to 5/3 upon x becomes x raised to 5/3 minus 1. And this power wala 5/3 minus 1 becomes 2/3. 5 minus 3 upon 3. 5 minus 3 upon 3 is 2/3. अब मुझे बता, सेकेंड ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा? सेकेंड ब्रैकेट में से, सेकेंड ब्रैकेट में से क्या, मैंने जो हाईलाइट किया उस ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा? X raised to 2/3. Perfect, perfect. If you remove x raised to 2/3 common, what remains inside the brackets? If you remove x raised to 2/3 common, what remains inside the brackets? 1 plus 5/3 log x. Right, right. So the final answer is dy by dx is equal to e raised to x into sec x into brackets tan x plus 1 minus x raised to 2/3 into brackets 1 plus 5/3 log x. Please write it down quickly. सॉल्यूशन के बाद वाला पहला स्टेप हुआ है सबका? सॉल्यूशन के बाद वाला फर्स्ट स्टेप हुआ है क्या? Yes. Yes, sir. सेकेंड स्टेप हुआ? सेकेंड स्टेप Yes. सबका हुआ? महक, विशाल, जयेश? Yes, sir. Done.
There you go. Done, sir. Can I turn the page? No, sir. I am waiting, beta. I'm waiting. Yes, sir. Done. Okay. All of you are done. Can I move on to the next page? Shall we go ahead? Yes, sir. Please check the question. Y equal to x cube minus 2 into tan x minus x cos x plus 7 raised to x into x raised to 7. Y Yes, equal sir. to x cube minus 2 into tan x minus x cos x plus 7 raised to x into x raised to 7. 3 बार UV रूल यूज होगा. 3 बार. सर स्क्रीन चेंज ना झाली. Ashley, आता चेंज झाली आहे का? Yes, sir. Ashley, मी झूम केलंय बघ. झूम केलंय बघ. हॅलो Ashley? Yes, sir. झूम झालं का? झूम झालंय का बघ. Yes, sir. Zoom झालाय. बर. आता UV रूल 3 वेळा यूज करायचा आहे. 3 वेळा. थ्री टाइम्स. पहली बार x cube minus 2 u tan x is v. दूसरी बार x is u cos x is v. तीसरी बार किसको लेने का u और किसको लेने का v? तीसरी बार 7 raised to x is u and x raised to 7 is v. राइट राइट. तो 3 बार यूवी रूल यूज होगा. कैन भक्ति ओके विशाल, कैन यू रीड यूवी रूल? विशाल,
मी बोलू का एकदा की तू बोलतोयस युवी रूल? विशाल. विशाल. हेलो. हेलो. विशाल. सर तो लेक्चर मध्येच नाही. अच्छा नाही आहे. ओके. जयश्री, युवी रूल मी एकदा बोलू आणि मग तू बोलशील की तू डायरेक्ट सांगू शकतेस? जयश्री. हॅलो. हा जयश्री, युवी रूल बोलू शकतेस का? हो सर बोलते. हा हा हा. If y is equal to uv, then dy upon dx is equal to u dv upon dx plus v du upon dx. Right. So UV rule. U dv upon dx plus v du upon dx. U dv upon dx plus v du upon dx. और तीसरी और तीसरी बार यूवी रूल यूज हो रहा है. U dv upon dx plus v du upon dx. Can you see it? Can you see it on the screen? Can you all see it on the screen? Yes, sir. Yes, sir. X cube minus 2 is to be looked upon as u. Tan x is to be looked upon as v. So u dv upon dx plus v du upon dx. मतलब x cube minus 2 into d upon dx of tan x plus tan x into d upon dx of x cube minus 2. दूसरी बार x into d by dx of cos x plus cos x into d by dx of x. और तीसरी बार 7 raised to x into d by dx of x raised to 7 plus x raised to 7 into d by dx of 7 raised to x. Is that step clear to all of you? Anybody, any problems in the step? Is that step clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. अब x cube minus 2 जो d by dx के पीछे है remains untouched, unchanged. What is derivative of tan x? What is derivative of tan x? Square x. Right. d by dx के पीछे वाला tan x remains untouched, unchanged. Derivative of x cube पर x raised to n का formula. Derivative of x पहला formula x raised to n का derivative n into x raised to n minus 1 gives me 3 into x raised to 3 minus 1. That is 3 into x square. What is अकेले constant 2 का derivative? अकेले constant 2 का derivative 0. Right. अकेले constant 2 का derivative 0. X remains untouched, unchanged. What is derivative of cos x? Derivative of cos x. Derivative of cos x. Minus sin x. Right. d by dx के पीछे वाला cos x remains untouched, unchanged. What is derivative of x? Formula. Derivative of x.
Derivative of x. 1. Yes. Yes. D by dx के पीछे वाला 7 raised to x remains untouched, unchanged. D by dx of x raised to 7 पर x raised to n का पहला फॉर्मूला n into x raised to n minus 1. तो x raised to 7 का डेरिवेटिव इज 7 into x raised to 7 minus 1. D by dx के पीछे वाला x raised to 7 remains untouched, unchanged. D by dx of 7 raised to x पर a raised to x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला. What is a raised to x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला? a raised to x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला. log a. a raised to x log a. That's right. यहाँ पर a का वैल्यू कितना है ये समय अभी फिलहाल? How much is a? यहाँ पर 7. 7 बराबर है 7 बराबर है. तो 7 raised to x का डेरिवेटिव is 7 raised to x log 7. 7 raised to x का डेरिवेटिव is 7 raised to x log 7. तो x cube minus 2 into sec square x plus 3x square tan x plus x sin x minus cos x plus 7 raised to x into x raised to 6 into 7 plus x raised to 7 into 7 raised to x log 7. मैंने दो टर्म हाईलाइट किए, उन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? मैंने दो टर्म हाईलाइट किए, उन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? X raised to 6. हाँ, and 7x. raised to x. 7 raised to x. Ashley? 7 raised to x. Sorry. हाँ, 7 raised to x and x raised to 6 कॉमन निकल रहा है. तो बचेगा क्या अगर तू 7 raised to x into x raised to 6 कॉमन निकाल लेता है? जो टर्म्स मैंने हाईलाइट किए हैं उन दोनों में से अगर 7 raised to x और x raised to 6 कॉमन निकलता है तो बचेगा क्या ब्रैकेट में? 1 plus x log 7. 7 plus x log 7. 7 plus x log 7. Yes, sir. 7 में दिसला. हम्म. अभी जैसे जैसे स्टेप होते जाएगा वैसे वैसे बोलते जाओ. Done, sir. Done, sir. Done.
Let us start with the sixth sum. फिर से एक बार 3 बार यूवी अप्लाई होगा, 3 बार यूवी अप्लाई होगा. पहली बार e raised to x into tan x पर, दूसरी बार cos x into log x पर, और तीसरी बार root x into phi raised to x पर. 3 बार यूवी रूल. You can start writing 3 बार यूवी रूल. dy by dx equal to e raised to x into d by dx of tan x, मतलब u dv upon dx plus tan x into d by dx of e raised to x, मतलब v du upon dx, u dv upon dx plus v du upon dx. फिर दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट में cos x into d by dx of log x plus log x into d by dx of cos x, uv rule, u derivative of v plus v derivative of u. दूसरी बार second pair of brackets. तीसरी बार जब यूवी रूल यूज किया है तो u किसको देखा है और v किसको देखा है? What do I look at as u and what do I look at as v? तीसरी बार जब यूवी रूल यूज हुआ है तो किसको u लिया है और किसको v लिया है? जयेश, हा सर. तिसऱ्यांदा यूवी रूल यूज केलाय बघा एकाच स्टेप मध्ये 3 वेळा. हो. तिसऱ्यांदा जेव्हा यूज केला तर u कोणाला घेतलाय आणि v कोणाला घेतलाय? U root x and v phi raised to x. परफेक्ट. परफेक्ट. सिद्धार्थ, Yes, sir. सिद्धार्थ, हा डी बाय डीएक्स च्या आधी जो e raised to x आहे that remains Yes, sir. untouched unchanged, that remains untouched unchanged, बरोबर आहे? हो sir. त्यानंतर what is d by dx of tan x? Sec square x. परफेक्ट. त्यानंतर प्लस साइन आणि मग तो tan x remains untouched unchanged. त्याच्यानंतर what is d by dx of e raised to x? d by dx of e raised to E raised to x. right. मग plus cos x remains untouched unchanged. What is d by dx of log x? d by dx of log x 1 upon x. मग plus log x untouched unchanged. Plus log x untouched unchanged. What is d by dx of cos x? Minus sin x. मग मायनस साइन आणि त्याच्यानंतर root x remains untouched unchanged. Root x remains untouched unchanged. What is d by dx of phi raised to x, Siddharth? Phi raised to x log 5. Right. A raised to x चा derivative चा formula a raised to x log a. Plus phi raised to x remains untouched unchanged. What is derivative of root x? Siddharth, Yes, sir. derivative of root x. Sir, 1 by 2 x raised to minus 1 by 2. It is 1 upon 2 raised to x ना बेटा. अरे root x चा Yes, direct sir. formula है ना. हाँ, सिद्धार्थ, sir. काय हो, फॉर्म्युला sir. काय root x चा? root x काय फॉर्म्युला? Minus 1 upon अरे root x चा फॉर्म्युला root x. सिद्धार्थ, root x चा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे ना. 4th फॉर्म्युला 16च्या लिस्ट मध्ये. In the list of 16 formulas, the 4th formula. yes, sir. काय? 1 by 2 root x. येस येस. म्हणून मी म्हटलं होतं डबल पेज वर लिहून घ्या म्हणजे आपण सम सॉल्व करताना बाजूला ठेवायचं डबल पेज. Look at the list of formulas and you have to refer the formulas. Can I move on to the next page now? Sir, please wait for 2 minutes. Waiting. Ashley, do you want me to zoom?
Ashley, do you want me to zoom in? No, sir. Ashley, are you done? Yes, sir. Done. Anybody? Any problems on this page? Anybody? Any problem on this page? No, sir. No, So dy by dx into equal to e raised to x into sec square x, that is derivative of tan x, is sec square x, plus tan x into derivative of e raised to x is e raised to x itself, plus cos x into 1 upon x, plus log x into derivative of cos x is minus sin x, जिसको bracket के अंदर लिखा है because of the minus sign. Because of the minus sign, I have put derivative of cos x into brackets. I'm talking about minus sin x. Minus sin x. Please put it into brackets. वो माइनस साइन की वजह से माइनस रूट एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला 5 रेज टू एक्स लॉग 5, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव इज ए रेज टू एक्स लॉग ए, 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स लॉग 5 प्लस 5 रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? e raised to x. is to x. तो बचेगा क्या? What remains inside the brackets? What remains inside the brackets after you take e raised to x common? Sec square x plus tan x. उसके बाद प्लस cos x into 1 upon x is cos x upon x. What is plus into minus? Plus into minus. Minus. Minus Log x into sin x. Jayesh, what was the last term in the question? Last term. Question was Purna, Jayesh. Question. हाँ पूर्ण question was ना.
y is equal to e raised to x into tan x plus cos x into log x minus under root x into 5 raised to x. I've done a small mistake in that dark green wala sketch pen wala step. Dark green. Can anybody point out क्या mistake किया है? सर माइनस रूट एक्स की जगह 2x लिया है. नहीं, not actually. दो mistake. Sir, sign. Sir, बाहर माइनस साइन आना चाहिए और अंदर भी माइनस साइन आना चाहिए. मतलब माइनस 5 raised to x इज टेकन कॉमन. उसके पहले ना एलसीएम लिया है इन दोनों में. मैंने हाईलाइट किया, देख इसमें एलसीएम लिया है तो वो 2 raised to x है ना अपना, सॉरी 2 root x है ना, वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 root x है ना, वो रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 2 root x into root x will be 2x. 2 root x is the LCM. 2 root x is the LCM. तो वो लास्ट टर्म वाला 2 root x है ना, वो सेकेंड लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. लास्ट टर्म वाला 2 root x अपॉन 2 root x, लास्ट टर्म वाला वो सेकेंड लास्ट स्टेप के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 2 root x into root x is 2x. और 5 raised to x कॉमन निकाला है और माइनस साइन भी कॉमन निकाला है. माइनस साइन कॉमन निकालना है, मैंने नहीं निकाला, मैंने मिस्टेक किया है. एलसीएम लेने के बाद माइनस साइन कॉमन निकाला है और 5 raised to x कॉमन लिया है. एलसीएम लेने के बाद माइनस 5 raised to x कॉमन निकाला है. The final answer is dy by dx into e raised to x into brackets sec square x plus tan x plus cos x upon x minus log x into sin x minus 5 raised to x into brackets 2x log phi minus 1 upon 2 root x. Can we go to the next sum? Yes, sir. Yes, sir. Pratik, Jayesh, Yes, sir. Jayashri, Yes, sir. Mehak, Yes, sir. fourth sum. Question number 4, 9.2. Exercise 9.2. Differentiate the following. Y equal to x square plus 3 upon x square minus 5. Siddharth, question check kar. Siddharth. Yes, sir, right है. Siddharth. Apply u upon v rule. Please look at x square plus 3 as u and look at x square minus 5 as u. U upon v rule. Look at x square plus 3 as u and look at x square minus 5 as v. Mehak, please read u by v rule. Complete rule. Do you want me to say it and then you want to repeat? Mehak, या आप डायरेक्ट बोलना चाहोगे? डायरेक्ट बोलते सर. Okay, बच्चा. Please go ahead. Please go ahead. Yes, sir. If y is equal to u into v, then dy
U upon V beta, U upon V. Oh, sorry, Fourth rule. हाँ. if y is equal to u upon v, then dy upon dx is equal to v into du upon dx minus u into dv upon dx upon v square, where v square is not equal to 0. Now please look at x square plus 3 as U and look at x square minus 5 as V. Please look at x square plus 3 as U and look at x square minus 5 as V. If y equal to U upon V, then dy by dx is V du upon dx minus U dv upon dx upon V square. If y equal to U upon V, then dy by dx is V du upon dx minus U dv upon dx upon V square. अब dy by dx के पीछे वाला part remains untouched, unchanged. What is x square का derivative? X square का derivative 2x. बराबर है x raised to n का derivative का formula n into x raised to n minus 1. तो x square का derivative is 2 into x raised to 2 minus 1. What is अकेले constant 3 का derivative? अकेले constant 3 का derivative 0. लिखा नहीं है मैंने, I have not written, क्योंकि 2x plus 0 will be 2x. अकेले constant 3 का derivative 0 लिखा नहीं है मैंने. dy by dx के पीछे वाला x square plus 3 remains untouched, unchanged. x square का derivative, x square का derivative 2x. हाँ, अकेले कांस्टेंट फाई का डेरिवेटिव, अकेले कांस्टेंट फाई का डेरिवेटिव 0. 0 लिखा नहीं है मैंने, दैट इज टू बी अंडरस्टूड. उसके बाद नीचे का x square minus 5 remains x square minus 5 the whole square remains untouched, unchanged. Denominator का x square minus 5 the whole square remains untouched, unchanged. फिर ऊपर कुछ कॉमन निकाला, देख ऊपर कुछ कॉमन निकाला है. ऊपर कुछ कॉमन निकाला, देख. 2x. Yes, Bhakti is right. 2x common निकाला, बराबर है. What remains is x square minus 5 minus of x square plus 3. फिर ब्रैकेट ओपन किया है तो कुछ कैंसिल हो रहा है. ब्रैकेट ओपन करने में कुछ कैंसिल हो रहा है. ब्रैकेट ओपन करने में कुछ कैंसिल हो रहा है. Yes, sir. What is getting cancelled? Plus x square minus x square. Perfect. How much? Perfect. What is minus 5 minus 3? What is minus 5 minus 3? Minus 8. Plus 8. Right, minus 8. And what is minus 8 into 2x? Minus 8 into 2x. Minus 16x. So the final answer is dy by dx equal to minus 16x upon x square minus 5 the whole square.
I'm waiting for you to finish off this page. I've been waiting for you to finish off this page. Also, let me know if you have any problems in this, in the sum. Done, sir. Shall we go ahead with the next page? Yes, sir. Yes, sir. Y equal to root x plus 5 upon root x minus 5. कौन सा रूल यूज होगा इस पर? कौन सा रूल यूज होगा इस पर? Y equal to root x plus 5 upon root x minus 5. सिद्धार्थ सम चेक कर. सिद्धार्थ क्वेश्चन चेक कर. Yes, sir. Which rule is applicable on this? Y equal to root x plus 5 upon root x minus 5. U upon V. Yes. Look at root x plus 5 as u. Look at root x minus 5 as v. Look at root x plus 5 as u and look at root x minus 5 as v. If y equal to u upon v, then dy by dx is equal to then dy by dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx. If y equal to u upon v, if y equal to u upon v, then dy by dx is v du upon dx minus u dv upon dx upon v square. Root x minus 5 remains untouched, unchanged. What is root x का derivative? 1 upon 2 root What is x. root x का derivative? Yes. What is 5 का derivative? अकेले constant 5 का derivative? 0. 0. Right. Root x plus 5 d by dx के पहले वाला root x plus 5 remains untouched, unchanged. What is root x का derivative again? 1 upon 2 root x and 5 का derivative अकेले constant 5 का derivative is 0. Could we take something common? Could we take something common in the numerator? Yes. 1 upon What 2 is root common in x. the numerator?
1 upon 2 root x. राइट तो ब्रैकेट में बचेगा रूट एक्स माइनस 5 माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस 5. और राउंड ब्रैकेट्स खुलने पर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और -5 बचेगा और वो 2 रूट एक्स है ना बाहर कॉमन लिया हुआ वो नीचे आएगा. उसके पहले मैंने 2 और 10 को रिड्यूस किया है. टू और 10 को रिड्यूस किया. 2 1 2 2 5 10 और 1/2 रूट एक्स का रूट एक्स नीचे आएगा. 1/2 रूट एक्स का 2 तो चला गया, रूट एक्स नीचे आएगा. फाइनल आंसर dy by dx equal to -5 upon root x into root x minus 5 the whole square. dy by dx equal to -5 upon root x into root x minus 5 the whole square. Any problems? And there's some. Any problems? No, sir. Next sum, y equal to x e raised upon x plus e raised to x. Y equal to x e raised to x upon x plus e raised to x. Can we start? Are you all ready? Are you all ready? Yes. U by v. U by v. Y equal to u upon v, then dy by dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square. If y equal to u upon v, then dy by dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square.
सर बोल ना. सर डिनॉमिनेटर मध्ये युवी रूल अप्लाय नाही होणार का? डिनॉमिनेटर मध्ये नाही, एक्स ई रेस टू एक्स वर युव्ही रूल अप्लाय होणार. डिनॉमिनेटर मध्ये तर एक्स प्लस आहे ना, डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स प्लस ई रेस टू एक्स आहे ना, न्यूमरेटर मध्ये एक्स ई रेस टू एक्स आहे. हा, मग सर. यू बाय व्ही च्या आतमध्ये युव्ही रूल युज होतोय बघ. नेक्स्ट स्टेप बघ, नेक्स्ट स्टेप बघ. एक्स ई रेस टू एक्स वर युव्ही रूल युज होतोय बघ. एक्स ई रेस टू एक्स वर युव्ही रूल युज होतोय बघ. येस सर. एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स के पहले रिमेन्स अनटच्ड अनचेंज्ड. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स यूवी रूल यूज हो रहा है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स, लुक एट एक्स एज यू, लुक एट ई रेस टू एक्स एज वी. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स is x into d by dx of e raised to x plus e raised to x into d by dx of x. x e raised to x का डेरिवेटिव x into d by dx of e raised to x plus e raised to x into d by dx of x. पर पहले u by v यूज होगा, फिर अंदर uv यूज होगा. डी बाई डी एक्स के पहले वाला एक्स ई रेस टू एक्स रिमेन्स अनटच्ड अनचेंज्ड. डी बाई डी एक्स के पहले वाला एक्स ई रेस टू एक्स रिमेन्स अनटच्ड अनचेंज्ड. उसके बाद इधर u प्लस वी वाला रूल यूज होगा. u प्लस वी वाला रूल, u प्लस वी वाला रूल यूज होगा. x plus e raised to x, untouched, unchanged. ये x भी जैसा था वैसे ही रहेगा. What is derivative of e raised to x? Formula. E raised to Derivative of e raised to x. e raised to x. E raised to x का derivative is e raised to x. हाँ, ये वाला e raised to x untouched unchanged d by dx के पहले वाला e raised to x मैंने मार्क किया, देख. What is derivative of x? What is derivative of x? 1. Right. फिर से डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. फिर से डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x itself. अब ब्रैकेट्स ओपन कर. What is x into x e raised to x? X into e raised to x, x e raised to x. X square X e raised in- to x. Right. What is x into e raised to x? X into e raised to x. X e raised to x. Right. What is e raised to x into x e raised to x? E raised to x into x e raised to x. E raised to x into x in x e raised to x. It is x into e raised to x the whole square.
x into e raised to x the whole square. And e raised to x into e raised to x is e raised to x the whole square. Then minus x e raised to x into 1 is minus x e raised to x. Minus x e raised to x into e raised to x is minus x e raised to x the whole square. Two terms are getting cancelled. Plus x e raised to x minus x e raised to x. And plus x into x e raised to x the whole square minus x e raised to x the whole square. फिर जो बचता है, क्या बचेगा? ये सब कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या तुम्हारे पास? व्हाट रिमेन्स? व्हाट रिमेन्स? कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? व्हाट रिमेन्स? x square into e raised to x plus e raised to x whole square. Can I take something common from both these terms? जो बचता है उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? e raised to x. E raised to x into x square plus e raised to x upon x plus e raised to x the whole square. dy by dx equal to e raised to x into x square plus 2. Oh, sorry. E raised to x into x square plus e raised to x upon x plus e raised to x the whole square. Ashley, Siddharth, both of you have finished writing? Yes, sir. सर पण एक डाऊट आहे. x बोला. x into e raised to x कॅन्सल कसं झालं? अरे x into e raised to x म्हणजे काय? तिथे स्टेप नंबर शेवटून सेकंड लास्ट आहे बघा त्याच्यामध्ये. तेच पण तुला विचारतोय. x into e raised to x म्हणजे काय? वर लिहिलंय बघ स्क्रीनवर. टॉपला लिहिलंय बघ मी. येस सर. काय? e raised to x स्क्वेअर. हा, मग ते x into e raised to x होल स्क्वेअर कॅन्सल होणार ना. एक प्लस एक मायनस आहे शेवटी. हा सर. येस सर. समजलं सर. Ashley, any problem? Ashley? No, sir. Have you all finished writing? No, sir. Yes. Hello?
Yes, sir. Sixth sum, y equal to 5 e raised to x minus 4 upon 3 e raised to x minus 2. Again, u by v rule. Look at 5 e raised to x minus 4 as u and look at 3 e raised to x minus 2 as v. Apply u by v rule. Apply u by v rule. Apply u by v rule. So dy by dx is equal to v into du upon dx minus u into dv upon dx upon v square. If y equal to u upon v, then dy by dx is equal to v into du upon dx minus u into dv upon dx upon v square. Jayashri, u by v rule bol. Jayashri, u by v rule. Yes, sir. If y is equal to u by v, then dy upon dx is equal to v dv upon dx minus u dv upon dx upon v square. Jayashri Parat bol. Jayashri Parat bol. If y is equal to u upon v, then dy upon dx is equal to v into dv upon dx minus u Wrong. into No. Jayashri. Jayashri, if y equal to u upon v, then dy by dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square. तू v dv upon dx बोलती आहेस पहिल्या पार्ट मध्ये. If y equal to u upon v, then dy upon dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square. Jayashri, u by v rule परत बोल. if y is equal to u upon v, then dy upon dx is equal to v du upon dx minus u dv upon dx upon v square. Right. 3 e raised to x minus 2 वाला part remains untouched, unchanged. 5 e raised to x पर ku वाले रूल के अनुसार 5 e raised to x पर ku वाले रूल के अनुसार 5 साइड में रहेगा और e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x. अकेले कांस्टेंट 4 का डेरिवेटिव 0. 5 e raised to x minus 4 untouched, unchanged. 3 e raised to x ku वाले रूल के अनुसार 3 कांस्टेंट साइड में रख, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x. अकेले कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? अकेले कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0. राइट. ब्रैकेट ओपन कर. What is 3 e raised to x? 3 e raised to x into 5 e raised to x. What is 3 e raised to x into 5 e raised to x? Siddharth, Yes, sir. 3 e raised to x into 5 e raised to x.
15 e raised to x square. Hmm. Pratik, -2 into 5 e raised to x. Pratik, Oh, sir. -2 into 5 e raised to x. -2 into 5 e raised to x. Come on, fast, Pratik. 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 हा सर आवाज येतोय माझा -2. मला आवाज नाही येत आहे तुझा. -2 into 5 e raised to x. मी मार्क केलंय बघ ना. नाही सर आन्सर बोलतो पण आवाज नाही जात आहे वाटतं आवाज आता येतोय आवाज अच्छा. आता येतोय. हा मायनस टू -2 into 5 e raised to x is -10 e raised to x. हॅलो बरोबर सर आहे. हा हा बरोबर आहे. 5 e raised to x into 3 e raised to x is -15 e raised to x the whole square. Minus into minus is plus. 4 into 3 e raised to x is 12 e raised to x. 15 e raised to x the whole square gets cancelled. How much is 10 e raised to x plus 12 e raised to minus 10 e raised to x plus 12 e raised to x? How much is minus 10 e raised to x plus 12 e raised to x? 2 e raised to x. Right. Final answer, dy by dx equal to 2 e raised to x upon 3 e raised to x minus 2 the whole square. 2 e raised to x upon 3 e raised to x minus 2 the whole square. Please let me know after you finished writing. Done. All of you are done? Mehak, have you finished writing? Mehak? Yes, sir. Jayashree? Yes, sir. Pratik, Jayesh, Siddharth, Ashley? yes sir Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Concentrate on the sum. If f of x is a quadratic polynomial such that f of 0 is 3, comma f dash of 2 equal to 2 and f dash of 3 equal to 12, then find f of x. All those who have the textbooks, open the textbook and please keep the sum in front of
if f of x is a quadratic polynomial such that f of 0 equal to 3, f dash of 2 equal to 2, and f dash of 3 equal to 12, then find f of x. I start. Let f of x be a quadratic polynomial. Quadratic polynomial मतलब जिसमें x का highest power is 2. Quadratic polynomial ax square plus bx plus c. मान के चल रहा हूं. Let f of x be ax square plus bx plus c. Quadratic polynomial जिसमें x का highest power is 2. और a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि a अगर 0 हो गया तो पहला वाला टर्म गायब हो जाएगा because 0 into anything is 0. And a comma b comma c belong to set of real numbers r. And a comma b comma c belongs to set of real number r. Real number r का मतलब negative infinity और positive infinity के बीच में जो भी नंबर आएगा they are all real numbers. मतलब a b और c negative infinity और positive infinity के बीच वाला कोई भी नंबर हो सकता है. It can be a natural number, it can be a whole number, it can be an integer, it can be a rational number, it can be an irrational number. मैं a b और c की बात कर रहा हूं. उसके बाद ग्रीन स्केच पेन वाला स्टेप f of 0. f of x में x के जगह पर 0 पुट किया है. टू फाइंड f of 0, f of x में x के जगह पर 0 पुट किया है. हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. कैसे आया f of 0? How did we get that f of 0? How did we get that f of 0? So question में दिल- x is equal to 0. f of x में x के जगह पर 0 पुट किया मैंने. f of x में x के जगह पर 0 पुट किया. But f of 0 is given as 3. So we have got the value of c. How much is c? How much is c? 3. 3. Right. अब एक काम कर, वो f of x है ना जो मैंने अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव निकाल. f of x का डेरिवेटिव, f of x का डेरिवेटिव is f dash x. f of x का डेरिवेटिव is f dash x. f of x का डेरिवेटिव is f dash x. a को साइड में रख, d by dx of x square. फिर b को साइड में रख, d by dx of x. and d by dx of c. डेरिवेटिव ले रहा हूं, f of x का डेरिवेटिव f dash x. What is derivative of x square? What is derivative of x square? 2x. Yes. What is derivative of x? Derivative of x. Derivative of 1. x. 1. 1. अकेले कांस्टेंट c का डेरिवेटिव. अकेले कांस्टेंट c का डेरिवेटिव. 0. 0. राइट. अभी f dash x क्या मिला तुझे? How much is f dash x? a into 2x plus b. हाँ, 2x plus b. राइट. 2ax plus b बराबर है. बराबर है. अब ये काम कर, f dash of x में x के जगह पे 2 डाल दे. f dash of x में
एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे 2 डाल दे, तो तुझे 4a प्लस बी इक्वल टू 2 मिलेगा। उसको इक्वेशन 1 ले। एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे पहले 2 डाल दे, तो 4a प्लस बी इक्वल टू मिलेगा। फिर वापस पीछे जा और एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे 3 डालना है। पहले एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे 2 डालना है और फिर एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पर 3 पुट करना है। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे 3 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? व्हाट डू आई गेट? एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे 3 पुट करूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे 3 पुट, हाँ, 6a plus b is इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? equal इक्वल टू to 12 इज 12. गिवन ना। तेरे को एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है। एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू वाज 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सिमिलरली एफ डैश ऑफ 3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है। अब 4a प्लस बी इक्वल टू 2 और 6a प्लस बी इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग 2 माइनस 1 मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। टू माइनस 1, what is 6a minus 4a? 6a minus 4a, 2a. 6a minus 4a, हाँ 2a. हाँ, और b कट जाएगा। How much is 12 minus 2? 12 minus 2? 10. 10. 2a equal to 10. So a is how much? A is how much? 5. ये a का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दे। a का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दे। फोर इंटू 5 20। 20 को राइट पे शिफ्ट कर। 20 को राइट पे शिफ्ट कर। हाउ मच इज b इक्वल टू? हाउ मच इज b इक्वल टू? Minus 18. It's 18. माइनस 18। b इज माइनस 18। अब एक काम कर, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू जो अपना f ऑफ x है ना उसमें डाल दे। a का वैल्यू कितना मिला था? हाउ मच वाज a? 5. 5. b Minus 18. और c? 3. 3. तो f of x is 5x square minus 18x plus 3. f of x is 5x square minus 18x plus 3. Five x square minus 18x plus 3.
Vishal, Pratik, any problem? Vishal, Pratik, No, sir. Siddharth, सर विशाल sir. नहीं है. Siddharth, Nice, sir. Ashley, any problem? No sir. Mehak, No, sir. Jayashri, Bhakti, Bhakti. Have you finished writing? Yes, sir. All of you? Yes sir. Is there Yes, anybody? sir. Hello? Yes, sir. Okay. Done. So can we end the lecture? 11th standard derivative is over. Huh? 11th standard derivatives is over. Okay. Sir, Ashleyला बोलायचं काय हाँ तरी. बोल. No sir काय नाही. हाँ बोल ना. नाही सर हाँ बोल Ashley बोल. काय नाही सर. हाँ Ashley बोल. सर डाऊट अरे बोल ना नव्हता काय का? हा काय म्हणतोय सिद्धार्थ काय म्हणतोय? सर त्याने माझा फक्त काय आवाज ऐकला असेल त्यामुळे तो बोलला असेल तसं. Yes, sir. अच्छा. नक्की काय प्रॉब्लेम नाही ना? नो सर नो प्रॉब्लेम. ओके चल ठीक है. बाय ऑल ऑफ यू. बाय. बाय Bye, सर. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.